Hello everyone, today we will be discussing the next topic of neoplasia, which is immune checkpoint interactions. This lecture will also be bilingual. It will be discussed in English as well as in Hindi. So, signals, these interactions are basically the signals that will modulate the T cell activation and function, and basically they will decrease the immune response against the tumor cells. So, we have to use some immunotherapies that will target these interactions. So these interactions are basically two examples: the interaction between PD1 and PDL1 or 2. The PD1 is present on T cell and the PDL1 or L2 is present on the tumor cell or any immune cells in the tumor microenvironment. They basically cause the T cell dysfunction or exhaustion, and the antibodies that occur against the PD1 to prevent this interaction are semiplimab, nivolumab, pembrolizumab. Now, and other type of antibodies that will act against the PDL1 are atezolizumab, durvalumab, and avelumab. Second type of interaction is between the CTLA4 and CD28. So basically the CTLA4 is present on the T cell and it competes with the CD28 for B7 that is present on the APC. So the CTLA4 main function is, we can see here, the CTLA4, if it is bound to the B7, it will cause the inactivation of the T cell, and this will reduce the immune response against the tumor cells. So we have to prevent the CTLA4 from binding with the B7, because if it binds, it is going to cause loss of T cell co-stimulatory signal. And the antibodies that will act against the CTLA4 are ipilimumab. Okay, so in this diagram, we will see the first interaction that was between PD1 and PDL1 or L2. It is shown here. PD1 is present on the T cell and PDL1 or L2 is present on the tumor cell. So if this interaction happens, it is going to cause inactivation of the T cell because of T cell exhaustion. And we don't want the T cell to exhaust because this will reduce the immune response against the tumor cell. So there are some antibodies that will prevent this interaction from happening. As we discussed above, against PD1 there are few antibodies and against PDL1 there are few antibodies. In this diagram, we are going to discuss the second type of interaction that was between the CTLA4 and CD28 as shown here. And there are some antibodies that are going to interact or inhibit the CTLA4 from binding with the B7. And if this does not happen, there will be no inactivation and the T cell will be kept activated against the tumor cells if it is bound with CD28. And these antibodies are, as we discussed above, against the CTLA4, which is ipilimumab. Okay. सो हमने इसमें पढ़ा कि जो इम्यून चेक पॉइंट्स होते हैं उनमें कुछ इंटरैक्शंस हैं. ये इंटरैक्शंस कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि टी सेल की एक्टिवेशन और फंक्शन को मॉड्यूलेट या फिर चेंज करते हैं. और बेसिकली ये उस इम्यून रिस्पॉन्स को जो टी सेल देता है अगेंस्ट ट्यूमर सेल्स उसको डिक्रीज़ कर देते हैं. अगर ये रिस्पॉन्स डिक्रीज़ हो गया, ट्यूमर सेल्स बढ़ने लगेंगे और इसलिए हमें कुछ कैंसर इम्यूनोथेरेपीज़ देनी पड़ती हैं जो कि इन सिग्नल्स को टारगेट करते हैं. तो ये इंटरैक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला PD1 और PDL1 या L2 के बीच में होता है. PD1 टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और PDL1 या L2 ट्यूमर सेल्स या इम्यून सेल्स ट्यूमर के अंदर जो है उनमें प्रेजेंट होता है. इस इंटरैक्शन की वजह से जो टी सेल है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और उसका डिसफंक्शन हो जाता है. इस इंटरैक्शन को इनिबिट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज़ होती है बॉडी में, जैसे कि PD1 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ है सेमीप्लिमैब, निवोलुमैब एंड पेम्ब्रोलिजुमैब. और PDL1 के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ हैं, वो हैं एटेजोलिजुमैब, डुरवालुमैब एंड एवलुमैब. दूसरा टाइप ऑफ इंटरैक्शन है CTLA4 और CD28 के बीच में. ये दोनों ही टी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये दोनों एक दूसरे से कम्पीट करते हैं
B7 के लिए, जो कि APC या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होता है। अगर CTLA4 ने आउटकम्पीट या फिर प्रिवेंट कर दिया CD28 को बाइंड करने से B7 से, तो CTLA4 B7 के साथ बाइंड करके टी सेल का को स्टिमुलेटरी सिग्नल को लॉस्ट कर देता है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एंटीबॉडीज होती हैं CTLA4 के अगेंस्ट, जैसे कि इपीलिमुमैब। इस डायग्राम में पहला इंटरेक्शन है ये वाला, जो कि PD1 और PDL1 के बीच में होता है। PD1 टी सेल पे प्रेजेंट है और PDL1 ट्यूमर सेल पे प्रेजेंट है। इस इंटरेक्शन की वजह से टी सेल का इनएक्टिवेशन हो जाता है, और अगर टी सेल इनएक्टिवेट हो गया तो ट्यूमर सेल्स बढ़ने लगेंगे, और इसलिए हम कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जो इस इंटरेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल PDL1 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं एटेजोलिजुमैब, डुर्वालुमैब एंड एवलुमैब। और PD1 जो कि टी सेल पर प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज़ हैं जैसे कि सेमिप्लिमैब, निवोलुमैब एंड पेम्ब्रोलिजुमैब। देन दूसरा टाइप ऑफ इंटरेक्शन था ये वाला, CTLA4 और CD28 दोनों ही टी सेल पर प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है B7 के लिए। B7 जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होता है। अगर B7 CD28 के साथ बाइंड करेगा तो टी सेल को वो एक्टिवेट कर देगा और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करेंगे। लेकिन अगर CTLA4 B7 के साथ बाइंड करता है तो वो टी सेल को इनएक्टिवेट कर देता है और इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। इसलिए कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि CTLA4 को इनिबिट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इपीलिमुमैब। Now we will discuss some cancer epidemiologies. Skin cancer is basically the most common type of cancer, and in that also the basal is most common, then squamous, and then melanoma, which is the least common skin cancer. In incidences, in males, most common is prostate, then lung, and then colon or rectum cancer. In females, the most common cancer is breast, then lung, and then colon or rectum cancer. In children, the most common type of cancer is leukemia, then CNS, and then neuroblastoma. And overall, the lung cancer incidences has decreased in males but has not changed in females. The mortality in males is mostly due to the lung cancer, then prostate, and then colon or rectum cancer. In females, the mortality is because of lungs again, and then breast, and then colon or rectum cancer. In children, the mortality is because of leukemia, then CNS, and then further neuroblastoma. And lastly, cancer is the second most common or leading cause of death in the United States, and first is the heart disease. So कैंसर एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो स्किन कैंसर होता है वो सबसे कॉमन कैंसर है, और इसमें भी बेसल स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, देन स्क्वामस एंड देन मेलानोमा विच इज़ द लीस्ट कॉमन स्किन कैंसर। कैंसर के इंसिडेंसेस में देखें तो मेल्स में सबसे ज़्यादा कैंसर होता है प्रोस्टेट का, फिर लंग का, और फिर कोलोन या रेक्टम का। फीमेल्स में भी मोस्ट कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट, देन लंग्स एंड देन कोलोन और रेक्टम। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कैंसर ल्यूकीमिया होता है, देन CNS एंड देन न्यूरोब्लास्टोमा। और ओवरऑल जो लंग कैंसर है उसके इंसिडेंसेस मेल्स में डिक्रीज हुए हैं लेकिन फीमेल्स में डिक्रीज नहीं हुए हैं। देन मोर्टेलिटी में देखें तो कैंसर की वजह से सबसे ज़्यादा डेथ मेल्स में लंग्स कैंसर की वजह से होती है, फिर प्रोस्टेट और फिर कोलोन रेक्टम कैंसर की वजह से। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी लंग कैंसर की वजह से होती है, देन ब्रेस्ट एंड देन कोलोन और रेक्टम कैंसर। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इज ल्यूकीमिया, देन CNS एंड देन न्यूरोब्लास्टोमा। एंड मोर्टेलिटी के बेसिस पे नोट में अगर देखें तो कैंसर जो होता है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, और फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है हार्ट डिजीज़।